All around us are people we see every day, and yet they remain unseen. Talk about poverty and we think of the Indian farmer. Talk of urban migration and we think of educated young people leaving villages for opportunities in our cities. But all around us, in our cities, are millions of impoverished and unskilled migrants. Hawkers, vendors, unskilled odd jobbers, construction workers, the people who iron our clothes, who work in our homes, who much like many among us have moved here with a dream. These are India's unseen. Most of us don't see or hear them, but Samit Ghosh did, and that led to Ujjivan in 2004. So when India became independent, it was not just freedom from the British, but it was freedom from poverty. And financial inclusion plays a very important part, elevation of poverty. So that was another strong motivation, emotional kind of motivation for us. As a financial service professional, this is a challenge we must take up. Ujjivan is a Sanskrit word. It means uplift, and that resonates with the objective of our organization. By November 2005, Ujjivan had moved to its first office and branch in Koramangala to reach out to Bangalore's urban poor. I was always passionate to work for the people and to work with them. When I was pursuing my post-graduation, I have come across the concept of microfinance. And soon after, I was looking for such an organization with similar ideas what I had in my mind. I was fortunate that Ujjivan given me that opportunity. And this is when we truly started feeling the power of our idea. Because alongside us, our customers started believing that they could build a better life. And some others did as well. என் பேர் விஜயலட்சுமி. நான் உஜ்ஜீவனில் 9 வருஷமாக கஸ்டமராக இருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு உஜ்ஜீவன் பற்றி தெரியாதுங்க. நம்ம உஜ்ஜீவன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தாங்க. இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி சேர்ந்தாக்கா நீங்கள் நல்லா இருக்கலான்ட்டுன்னு இந்த மாதிரி எங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து நான் அப்பத்துலேருந்து இருக்கிறேன் நான் உஜ்ஜீவன் கஸ்டமராக. அப்புறமா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி இருக்குது, இதில் சேர்ந்தாக்கா நல்லா இருக்கும், நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, எஜுகேஷன் லோன் இருக்குது, செல்ஃப் எஜுகேஷன் இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் எல்லாம் இருக்குது, சேருங்கன்ட்டு நான் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களால சொல்லிவிட்டு நான் சேர்த்து விட்டேன். ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಲೀಡರಾಗಿ இருக்கிறேன் இப்போ இந்த ಗ್ರೂಪ್ல. ಕಸ್ಟಮರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಉಜ್ಜೀವನ್ಗೂ ಈಗಿರೋ ಉಜ್ಜೀವನ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಉಜ್ಜೀವನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ. ಉಜ್ಜೀವನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஃபஸ்ட் லோன் எடுத்தாங்க 15,000 ரூபாய். எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, எங்கள் பசங்களுக்கு படிப்பு தேவைப்பட்டுச்சு. செகண்ட் லோன் எடுத்தேன், எனக்கு கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை இருந்துச்சு, அது தீர்த்தேன். இப்போது வந்துட்டு தேர்ட் லோன் எடுத்தேன் வீடு ரிப்பேருக்காக. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. Very soon, we had 13 branches in Bangalore, and by April 2007, we were in Delhi in Dakshinpuri. That was the beginning of our story in the north. Today, the north has 115 branches and is growing at a very steady pace. मैं आज एरिया मैनेजर हूँ, 21 ब्रांचेस देखता हूँ पंजाब और हरियाणा की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे उस टाइम पे खुद भरोसा नहीं था। तब हम मात्र 3 या 4 राज्यों में काम कर रहे थे। आज हम हिंदुस्तान के 24 राज्यों में काम कर रहे हैं और निरंतर विभिन्न भाषाओं के साथ हम प्रगति कर रहे हैं और आज 26 लाख महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उज्जीवन ने एक फ्रीडम महिलाओं को एक और दिया हुआ है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं जिसमें जो उनके हित में हैं, तो उनके हित में रहकर भी हम अपने जो उज्जीवन में ऑफिसेस हैं, ब्रांचेस हैं, वहाँ पे फ्रीडमली होके वर्क करते हैं। हेजिटेशन नहीं होती है, किसी तरीके से जेंडर वाइज नहीं लगता है, कहीं पे लगता है कि पुरुषों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, महिलाओं को नहीं। एक समानता रखी गई है उज्जीवन में। सबसे बड़ी चीज़ यही है हमारे यहाँ पे। Operations in the east followed the north, and soon this region would achieve milestones no one would have believed possible in 2007. সে কাউন্সিলর আমাদেরকে দেখেই প্রথমে বলেন, কোনো লেডি যদি টাকা নিয়ে টাকা পরিশোধ করতে পারে, সেই দিন আমি ভাববো যে আমার ফুল প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে আমি হাফ প্যান্ট পরবো। তারপর যখন আমরা সেই জিনিসটা সাকসেসফুল হলাম, ধীরে ধীরে কালীঘাট ব্রাঞ্চ এরিয়াতে যখন সাকসেস হলাম, তখন আর স্যারকে গিয়ে আমরা কখনো বলিনি যে স্যার আপনার ফুল প্যান্ট
রেখে হাফ প্যান্ট পরার জন্য বলিনি। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग उज्जीवन को जान गए हैं, उज्जीवन का एक अलग ब्रांड हो चुका है। अब कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमको कस्टमर आसानी से मिल जाते हैं। पिछले 7 साल में हम लोग यही देख रहे हैं। एक कस्टमर हमारा ऐसा था जो मैंने उस समय एक सब्जी का बिजनेस करता था, एकदम स्ट्रीट में सब्जी बेचता था। उस समय मैंने उसको 7,000 का लोन दिया था, लेकिन आज अगर देखेंगे तो वो कस्टमर का एक बहुत बड़ा अच्छा दुकान है और वो सब्जी का होलसेलर हो चुका है। मेरा एक सपना था अवार्ड मिलने के लिए और वो सपना फुलफिल किया है और एमडी सर का साथ लॉन्च करने का भी एक सपना था, वो सपना फुलफिल हुआ है। And growth was not just about more branches and more customers. We were also planning for tomorrow. We were also hiring the best to create our future leadership team. Our first group of management trainees came on board in April 2008 and many have lived to tell the tale. So when I was in finance, I really did not expect that I would be entrusted with so many responsibilities and that I would really get to work all by myself in handling whether the equity round or talking to the investors directly. That was far from reality for me. That was something I really value till date, and I'm so very grateful to the management to have given me this opportunity. By this time, Ujjivan was growing at a rapid pace. We had customers bringing in customers, which is the most satisfying validation of our vision. When people truly believe that an idea works, they want to spread the good word and the good work to more of their friends. If the conquest of the East began in 2007, by 2009, we had our first branch in the West, in Pune. And soon, we were reaching out to 50,000 families in Mumbai. The time we joined around 8 years back, I think we were just branching out because you hardly ever think that a young guy of 26 or 27 in any company would be given a task to how to start a new market such as Mumbai, give responsibility to start a new state such as Gujarat, right? So I think that has made me who I am today, and I think I have Ujjivan to thank for that. उज्जीवन महिलाओं को 8-10 हज़ार से कर्जा देती थी, तो ये देखकर मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था कि सच में ये 8-10 हज़ार से उनकी गरीबी दूर होगी क्या। पर आज जब 7 साल के बाद मैं देखती हूँ तो महिलाओं के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। बहुत सारी महिलाओं ने अपना जो बिजनेस रास्ते पर चलाते थे, दुकान खरीदा है, दुकान में लगाया है। बहुत सारी महिलाओं ने अपने बच्चों के हायर एजुकेशन में पैसा लगाया। कितने सारों ने घर खरीद कर उसका किश्ता वो अपने कमाई से चुका रहे हैं। जब ये इनकी तरक्की देखती हूँ, परिवर्तन देखती हूँ, तो मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है कि मैं उज्जीवन के साथ जुड़ी रही हूँ। मेरे 7 साल के करियर में मैंने जो भी उज्जीवन को दिया है 110%, उसमें मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर एंड सर्विस चैम्पियन का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा मुझे ये भी खुशी है कि जो भी मेरी वजह से कस्टमर के लाइफ में चेंजेस आए हैं, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। While we were growing, we were also laying the foundations of what the Ujjivan of tomorrow would be. By 2010, we were already, for 2 years running, one of the best workplaces in India. And Unitas had chosen Mr. Ghosh for their Inspiring Leader Award. But Ujjivan was not and is not just about groups and loans. Towards holistic upliftment, Ujjivan had also partnered the launch of the Parinam Foundation. With Parinam, we were able to bring educational and healthcare interventions to the customers we were interacting with. With Parinam, we also created Diksha, a unique financial literacy program, way before this government's initiatives towards financial literacy and inclusion. The vision the founders had, my parents had, was very clearly to give opportunity to people who didn't have that opportunity. So you need to have that other, more social perspective to it if you actually want to accomplish bettering someone's life, which is Ujjivan's motto. And that's where Parinam came in, where Ujjivan handled the finance aspect of things and Parinam handled everything else. So healthcare, livelihood, community development, childcare, education, everything came under us. My dad turned around one day and said, your mom started this NGO and why don't you work with her and help her? She got me to work on the financial literacy program at that moment, which she felt was important for Ujjivan customers. At that, no one was asking for it. She just knew that they needed a program like this, which got me to work creatively on creating something from scratch.
We have a lot of success stories to tell, but the fact is that every one of these successes was achieved with a struggle. The crash of the microfinance business in Andhra Pradesh, the bottoming out of many microfinance organizations. We have had to chart our way through all of these. Some of the things that we did during the crisis time was that our staff salaries were paid timely, even during the crisis, even now on the last working day of the month. We did not let go of our existing customers. We made sure that their needs were met, and we also gave them loans even during the crisis time when they found it difficult to get loans from elsewhere. The other thing that we did was also made sure that our rents to the landlords were given out on time. So these 4 things that we did helped us sail through the crisis without too much of a problem. In 2011, Ujjivan was declared Microfinance Organization of the Year. To a great extent, it is the foresight of the leadership team that has ensured that Ujjivan is where it is today. A whole lot else has happened. Ujjivan is today a case study at Harvard. We have been among the best workplaces several years running. When we look back at 10 years of Ujjivan, it has been a long, interesting journey. A journey that has taken us to 24 states and union territories and 26 lakh customers. And the reason they come to us is because they believe we understand them. And that is what we believe will be the cornerstone of our success in the future. Converting to a small finance bank has always been our aspiration, because becoming a bank, specialized institution, which serves this segment of community in our country has been always our aspiration, because as a bank we can provide the full range of services. This journey is going to take another 20 years to reach its final destination, at least in India. We have 8,000 people working right across India, Unfortunately, today I don't know most of them, because they're spread right across the country, But they're all driven by the same objective, the objectives of those of us who set it up. And they get the same thrill from doing the job and getting the respect of our customers, and seeing the impact, how we have changed the lives of our customers. We see the unseen, we hear the unheard, we truly understand the people we serve. छुआ है आसमां बिन छोड़े कभी ज़मीन, और आज लगती है खुशी कुछ अपनी सी। छुआ है आसमां बिन छोड़े कभी ज़मीन, और आज लगती है खुशी कुछ अपनी सी।